Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I think you are hearing me. आप ज़रा please make sure that you are listening me or you are hearing me. Write down your comments and comment में नीचे लिखें. Write down in the comment section that you are hearing me. Please, I need your feedback. ठीक है? Last time हम पढ़ चुके थे सेलेक्ट स्टेटमेंट में पढ़ा चुका था और ठीक है इफ एल्स और सेलेक्ट में पढ़ा चुका था। तो यहाँ से फंक्शन स्विच एंड चूज फंक्शन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैं ज़रा कमेंट सेक्शन की तरफ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग मी क्लियरली? मेरी आवाज़ सही आ रही है वसीम? आप मुझे सुन रहे हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं आगे जाऊं और कोर्स पढ़ाना शुरू कर दूं। ठीक है? सो जी, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक, फॉर योर रिस्पॉन्स। यस सर, क्लियर है। ठीक है, वसीम कह रहा है कि यस सर क्लियर है। अच्छा, आ जाएं कोर्स की तरफ आ जाएं। देखें, लास्ट टाइम इनफैक्ट मैं ये पढ़ा चुका था आपको। ठीक है, बल्कि ये जो स्लाइड मैंने ओपन किया ये भी मैं पढ़ा चुका था, लेकिन चलें इससे फिर थोड़ा स्टार्ट लेते हैं। और बल्कि ये मैं पढ़ा चुका हूँ यार, आगे काफ़ी लूप स्टेटमेंट और फॉर नेक्स्ट। ठीक है, तो चलें फिर भी मैं यहाँ से दोबारा पढ़ा देता हूँ। स्विच फंक्शन देखिए, फंक्शन स्विच एंड चूज़ हमारे साथ विजुअल बेसिक डॉट नेट में, विजुअल स्टूडियो में हम स्विच एंड चूज स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट, स्विच फंक्शन जो है ये देखिए, इसका सिंटैक्स ये है। हम बाहर लिखते हैं स्विच, अंदर एक एक्सप्रेशन होती है कामा, उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू होती है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन 2 और फिर वैल्यू 2 और उसके बाद ये कंटिन्यू रहता है अनटिल द लास्ट एक्सप्रेशन। लास्ट एक्सप्रेशन भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है और उसके साथ क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, एन वैल्यू। ठीक है, nth एक्सप्रेशन एंड nth वैल्यू, ये आखिरी एक्सप्रेशन या आप इसको सिंटैक्स इसका ऐसे होता है। ठीक है, आखिरी वैल्यू और आखिरी एक्सप्रेशन। इसके एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। देखो, बाहर मैंने लिख लिया एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर इक्वल टू, और स्विच के अंदर मैं लिखता हूँ इंटीजर वैल्यू इज लेस देन 0। अगर 0 है तो क्या करो, इंटीजर वैल्यू नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव -1 मल्टीप्लाई करो ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का तो आपको पता है कि हम अगर जब हमेशा चाहते हैं कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आए तो हम उसका मैथमेटिक्स में उसकी वैल्यू की उस टर्म को विद इन एब्सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं, मतलब वो उसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं आखिर में तो वो पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, तो और अगर वैल्यू स्विच के अंदर 0 से लेस नहीं है तो इट मीन्स या वो 0 है या 0 से ग्रेटर है, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो फिर क्या करो, इंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, तो इंट वैल्यू ही शो करो, उसको किसी -1 के साथ मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, ये मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ ये स्लाइड्स, बल्कि ये 22 नंबर स्लाइड है, 22 से लेके 25 तक, इनफैक्ट 28 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आज जरा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दूसरा फंक्शन है चूज। स्विच तो हमने पढ़ लिया। चूज फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो ऐसे है, बाहर हम लिखते हैं चूज, अंदर इंडेक्स 1 चॉइस 1, फिर चॉइस 2, फिर चॉइस एन, लास्ट चॉइस तक। ठीक है, एक नोट है इसके साथ, कहते हैं अनलाइक एरे इंडेक्स, कहते हैं एरे इंडेक्स की तरह चूज इंडेक्स फ्रॉम 1 to 1। और आपको पता है जो एरे इंडेक्सेशन है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो कहते हैं एरे के इंडेक्सेशन की तरह इसको मत समझिए। कहते हैं चूज में हम इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 to n। ठीक है, देखो ना, इंडेक्स चॉइस 1, इंडेक्स 1 इस तरह। तो नीचे यहाँ एग्जांपल, इसकी मिसाल देखें, बाहर मैंने चूज लिखा हुआ है और अंदर है इंटीजर वैल्यू, फिर कामा थैंक यू, और फिर क्या है, दैट इज गुड। तो ये जो है बाहर चूज है, और इससे जो वैल्यू, अगर इंटीजर वैल्यू लेट्स सपोज जो हम चाहते हैं, हम कहते हैं अगर 1 है तो क्या करो, थैंक यू उठाओ और स्ट्रिंग में डालो। अगर 1 नहीं है कोई और है तो फिर क्या करो, दैट इज गुड उठा के स्ट्रिंग में डालो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स।
जो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 1 2 दो हो सकती है। तो अगर 1 है थैंक यू, अगर 2 है तो दैट इज गुड उठा लो, और ये स्ट्रिंग में असाइनमेंट इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, आ जाए। लूप स्टेटमेंट, हमारे पास लूप स्टेटमेंट है डू। ये शुरू करने से पहले मैं ज़रा कमेंट सेक्शन की तरफ जाता हूँ। तो यस सर क्लियर है, प्रेजेंट सर कबीर, अच्छा स्टूडेंट्स आ गए हैं, आप प्रेजेंट प्रेजेंट कह रहे हैं, ठीक है। 3 4 स्टूडेंट आ गए, प्रेजेंट कह गए हैं और फिर चले गए, मेरे साथ नहीं है, ठीक है। चले मैं देखता हूँ, उनको नोट करता हूँ, उनके साथ देखते हैं फिर। अच्छा, अ, तो देखें अब लूप स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है डू, ये देखें नीचे सिंटैक्स, सिंटैक्स शुरू हो गया, हैश हैश सिंटैक्स जो है, हैश सिंटैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोड। ये मैंने सिर्फ हेडिंग दी है कि भाई सिंटैक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो है यहाँ से सिंटैक्स स्टार्ट हो रहा है, डू वाइल अनटिल, तो कहते हैं जब तक वाइल लूप और कंडीशन ट्रू नहीं होता, तो इसके बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करते रहो, डू करते रहो, और आखिर में जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्जिक डू, डू से निकल जाएं, और फिर भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, वो स्टेटमेंट्स डू के बाद आप एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो जो भी है वो लिखें, और उसके बाद फिर लूप, ठीक है। यहाँ पे डू, एग्जिट डू, और फिर जो है डू वाइल, ये डू वाइल लूप में और डू वाइल का आपको पता होगा। यहाँ पे एग्जिट डू के बाद स्टेटमेंट्स और लूप, यहाँ ये लूप इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। लूप करते हैं जाए। फिर आगे है एग्जाम, इसकी देखें, ये इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका सिंटैक्स, ये मैंने मिसाल दी आपको एग्जाम्पल कि एक मॉड्यूल मैंने बनाया और उसका नाम मैंने मॉड्यूल 1 रख दिया है बिकॉज ऑफ नेमिंग कन्वेंशंस, और मेन फंक्शन है सब मेन, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग इनपुट, और डिम स्ट्रिंग इनपुट है स्ट्रिंग, ठीक है, क्रिएट हो गया। मैं उसको कहता हूँ कि डू अनटिल स्ट्रिंग में इन स्ट्रिंग इनपुट में जब तक हम स्टॉप नहीं डालते तो तब तक ये चलता रहे, और जो स्ट्रिंग में आप देंगे इनपुट, तो यू केस का मतलब है अपर केस, के उसको अपर केस में समझे, ठीक है, या कन्वर्ट करे, ठीक है। तो सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन व्हाट शुड आई डू, स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा व्हाट शुड आई डू, तो फिर आप कीबोर्ड से स्टॉप लिखें या स्टार्ट लिखें, जो भी लिखे ना, प्रोग्राम आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड आई डू, तो आप कीबोर्ड से देते हैं सिस्टम डॉट कंसोल रीड लाइन, कीबोर्ड से आप जो कीज प्रेस करेंगे वो रीड लाइन उसको रीड करेगा, और वो आ जाएगा स्ट्रिंग इनपुट में। जब आ जाएगा तो फिर स्ट्रिंग इनपुट ऊपर जाएगा, चेक करेगा, ठीक है। जब वो चेक करेगा कि भाई स्टॉप, स्ट्रिंग इनपुट में कीबोर्ड से यूज़र ने स्टॉप तो नहीं लिखा, अगर लिखा है तो यहाँ पे वो देखेगा, अगर है तो फिर क्या हो जाएगा, डू से निकल आ जाएगा, मतलब स्टॉप, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो लूप इंक्रीमेंट होता रहेगा, और तब तक लूप चलेगा जब तक आप कीबोर्ड से स्टॉप एंटर नहीं करते। ये मॉड्यूल यहाँ पे सब मेन जो है, यहाँ पे ये जो सब मेन है, ये यहाँ पे एंड सब हो गया, ख़त्म हो गया, और ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे स्टार्ट, तो यहाँ पे एंड मॉड्यूल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डू व्हाइल लूप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, बट बिफोर मूविंग लेट मी चेक द कमेंट्स। नो कमेंट्स, ओके। आए नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जो है लूप स्टेटमेंट, फार स्टेटमेंट। देखें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लूप स्टेटमेंट्स है, जिस तरह एक लूप स्टेटमेंट मैंने पढ़ा दिया डू है, अब नया आ गया दूसरा फार है, इस तरह फिर एक और है लूप स्टेटमेंट फॉर ईच नेक्स्ट जिसे कहते हैं, एक और लूप स्टेटमेंट है सिर्फ वाइल है जिसके साथ डू नहीं है, लाइक लूप स्टेटमेंट की तरह विद स्टेटमेंट है, ठीक है, इनूमरेशंस हैं, ठीक है, लाइक विद स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो चलें, हमारा जो नेक्स्ट ये जो है अभी प्रोग्राम या स्टेटमेंट जिसे कहते हैं वो है फॉर लूप। तो यहाँ से सिंटैक्स स्टार्ट हो रही है फॉर, और इंडेक्स में हम स्टार्ट डाल देते हैं टू एंड, फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट टू एंड, स्टेप का मतलब एक इंक्रीमेंट करते जाएं, ठीक है, आगे एक एक जाएं। ये सिंटैक्स है, नीचे मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे फॉर लूप के स्टेटमेंट्स, यहाँ पे एग्जिट फॉर करें, एग्जिट फॉर करें, और ये एग्जिट फॉर के बाद कुछ स्टेटमेंट्स, और फिर नेक्स्ट इंडेक्स को ईच टाइम आइटरेट करें और मूव करें, आगे जाते जाए, ठीक है। मॉड्यूल में अगर आप आ जाएं तो मॉड्यूल 1
ये देखें एक एग्जांपल मैंने अब आप लोग के लिए लिखी है यहाँ पे। मॉड्यूल 1 स्टार्ट हो गई है, and then sub main. Here the main function starts, and here a variable has been declared, or a variable has been created. Loop index is is a variable of type integer, and then here we are checking the loop. If for loop index starts from 0 until 3, and the output statement system.console.write line hello. So each time a hello message will come on the screen in until the loop is true, and once the loop gets wrong or false, so it will exit. Okay, next loop index means next means each time it will increment one by one. First it is 0, then it will become 1, then it will become 2, and then it will become 3, and on 3 it is end, so the loop will get terminate. Okay, so now the sub main function starts here and it ends here. Okay, the module 1 starts here, and then the module ends here. Okay, so I hope you have understood the loop statement, the for loop statement. Okay, for so now let's move to the next loop. This is a loop statement and it is called while loop. Okay, so here is the syntax of while condition. Here is the condition of while, and then the statements inside the body of the while loop, and then here the end while ends. Okay, example great. Yeah, let's come to the example of while loop. Sub check while. Here is a sub procedure. It is called sub check while has been called, and after that sorry, not has been called, has been created. Subroutine has been created. Its name is check while, to check the while loop. Okay, an integer variable counter has been declared or created, and 0 has been assigned to it. Then in another variable, its name is integer number is created, and 10 has been assigned to it. And while integer number is greater than 6, so assign so each time decrement int number by 1, it is decrement -1, and increment int counter by 1. Okay, so this is a decrementing the variable, and here we are incrementing another variable counter inside the while loop. Okay, here the end while the while statement ends, and there is a message box, message box. The loop ran and enter count and end times. Okay, uh, this variable end counter, it counts how many times the loop ran. So you see here is the end counter. So each time the loop runs, so the end counter variable gets incremented. So at the end, when the loop while loop statement ends, so this message box will show you how many times the loop ran. Okay, so here the ends of the subroutine ends. Okay, I hope you have understood the while loop, how the while loop works, and how the different statements may be executed or may get executed inside the body of the while loop. So I hope you have understood. Let's move to the next slide. But before moving, let me check the comments. No comments? Okay. All of the students are sleeping and they are cheating. So anyway, let's see. We have another statement here, that is for each next. Okay, so here is the syntax for each element and group in a group. For each element the loop will execute, and these are the statements which normally lie inside the body of the each for loop. And here the for exits and some statements after exits, and then next element means it is a loop. Each time the, the pointer or the loop will be incremented one each time,
So next element means to increment the loop each time by 1. Okay, so here the main function starts, and inside the main function an integer array, an array of size 2 and an integer variable both are created with type dim. Dim means dimension. Here integer array, 0 location in the array of size 2 we have assigned 0, and then in the array on location 1 we assigned 1, and then in the array we assign 2 at the second location. So it means that this array is not of size 2, it is of size 3, 0 1 2. And then the loop statement for each int item, for each int item in int array, inside the array for each item what do system.console.write line array int array. Int array means so what is the output of this loop? It will output the stored elements in the array each time when the loop gets executed or incremented. Okay, so you see 0 1 2, the output will be 0 1 2. The loop will execute for 3 times, or it will get incremented 3 times, and then each time it will print one digit, 0 then 1 then 2. So this will be the output of this for each next loop. Okay, so here the next item, the incrementing part, which increments the loop each time by 1. Next item, the next word shows what is the function of this word. So next item means to go to the next element in the array. Okay, here the sub main function starts and here it ends sub. Let's go to the next slide. Let me check the comments. No comments and very few limited students. Okay, anyway, why you have almost there are 35 students in your class, and here I have just only 6 to 8 students are with me. Why? Maximum 10 students. So how about rest of the 25 students? This is not good. Inform others to join me. Otherwise I will mark them absent. Regularly I am taking attendance. Okay, so another statement or loop, it is like a loop. Okay, it is not loop but in fact it works like a loop, and we call it with. So this time I will go directly to the example. Here we wrote with, after with we wrote text box 1. It is a control, you may call it object. With text box 1, its height should be 1000 and width should be 3000. Text, the text which the textbook will display, welcome comma world. Okay, so with object statements end with. Here with object starts, and then the statements. Okay, then this, and then end with is ended. Okay, so it works like a loop but it is not loop, and in the latest high level languages it normally works with dot with. When we put dot, so after there dot, it displays with and then object, but it may vary from editor to editor. Okay, it depends. So you may use with object, and it works like a loop. You may practice it in the Visual Studio. Okay, I will go to the next slide now. Enumerations. It also like with it works like with. You see here the module starts and enum days. So Sunday 1, Monday 2, Tuesday 3, Wednesday 4, and here and enum. Okay, the enum ends here and the enum starts here, and this is here the module starts. Okay, so the module has not been closed yet, only the enum has been closed. So here the sub main function starts. Inside the main function we put an input line. You see input statement. Okay, output, we normally call it IO stream, input output streams. So this is system.console.write line.
Monday is day. Monday is which day? So days, here is the name of enumeration, enum days, and after days you just put dot and then you write Monday. So Monday is day. So days dot Monday is day 2. So here you may show the days of a week like this by using the enumerations. Here the sub ends and then the module ends. Okay. So I hope you would have understood the enumeration, which works like with statement, and I think it's easy. You may do practice. You may use it by practicing it again and again in Visual Studio.net. Okay. So now let's move to the next slide. Option statement. Yes, option is a very important statement in Visual Studio.net. You know, we can set option explicit to either on or off. When it is on, so it means it requires declaration of all variables before used. So you must declare all the variables before using them when this option explicit is on. So normally if it is off, so no need. If you haven't declared a variable, still you may use it. But when it is on, so you must declare all variables before using them. If you have used them and you haven't declared them before, so it will give you an error. So normally you may set this option in Visual Studio. Okay. Now come to the next point, option compare. This is another option, binary text. So specify strings are compared using binary or text comparison operations. Normally option compare is used for comparisons. As it specifies, strings are compared using binary. If you want that inside your program string should be compared, it should be considered as binary. So then you may set this option. Our text comparison operation are normally there are certain operations, we call them text operations. So if you are concerned with text operations, or if you are concerned that your strings should be considered or compared as binary, then you may set this option, and this option is called compare option. Let's move to the third point, third option, option strict. Okay, one is option explicit and this is option strict, on off. When this option is on, so what happens, it used when assigning a value of one type to a variable of another type, indicates any possibility of data loss. Okay, if you are assigning an integer to a double, a type of double variable, or if you are assigning a variable of type binary or boolean to a type of string or character. So, but it is very dangerous by keeping this option on, because you may lose some data. So I think it is a good practice to always assign data or switch data among variables or between variables which are of the same type. Otherwise you may use typecasting, but I'm not in favor of this option to be turned on. So I will not make you confident to use this option, because this option is dangerous. You may lose while casting variables from one type to another. You may lose data. Okay, it's dangerous. So I hope you have understood these options. Let's move to the next slide. Okay, come how we can use strict option. Okay, here is an example. Option strict is on. Okay, you see this option is on. Here the module 1 starts. Here the main function start. Here we are declaring two variables. One is of type double and another of type integer. So here I have assigned a value of double, I means in decimal, to which variable? DB data. Okay, and what I'm doing here now, cend means it is a kind of typecasting, convert integer from DB data to integer data. Not, you see, int data and DB data are not equal, are not, you can't assign them, because one is of type double and the other is of type integer. So if you are going to assign
db data of type double to integer, so definitely there are maximum chances to lose the data. So now what we are doing, we are using a stream out input stream system.console.write-ln. Inside this stream, in the parentheses, we use normally in data, which is integer, and then and by concatenating it with string in data. Okay, so we are it is the right line. So what will happen if you, this is okay, it is inside double quotes, so it will be displayed as it is, and then in concatenation what will happen, in data. So from here we are inputting the in data integer, and you see in double we have assigned this value. Okay, so what happened here, we converted the db data to in data, and you see here, I think it should not be right line, I think it is a mistake, it should be oh yes, it is not read line, it is right line. So it will display on the screen the this value, it has been typecasted. So what will happen, the numbers after the dot, it will be truncated because of losing the data, because of wrong typecasting, because of this tick on. So normally we have assigned 3.14159, and here this statement will display only 3, the integer. So what does it mean? It means that we have lost the remaining part after the dot, after the decimal. So this is not good. This is how I wanted to teach you by telling you about this strict option on. So if you will keep this option on, so you may lose the data, and here what you saw, we lost some data. So here the end sub and here the module ends, and I hope you have understood what strict option does and how it can be used, and in which situation case it can be used. Okay, let's move to the next option, import statement. Okay, to import a namespace. Okay, namespace normally you may call it libraries, and we normally import them in our program. Okay, here is its example. Again, the option strict, it is this time it is off now, and in the last program it was on. Here we import what, console, I mean the IOStream statements normally present with this namespace. And you know, normally the console, the black screen on which you normally you start typing your program. So the console screen, console programming, it is also available present in VB.NET or C#. Okay, and the same screen which normally students use in their early semesters, in first semester or second semester. So it is the same console screen. Okay, console programming, we normally know it as we normally know it with the name of console programming. So here the module starts, module 1, the main function starts, right line hello to the screen, and then end sub, and then end module. Okay, so if this statement would have not been important, so this right line would have not worked. So this statement right line, it works only because we have imported system.console. Okay, and the strict option is off, that is why it is working. So this was an import statement, and I think you have understood it. Let's move to the next slide, and this slide is the references. The book which I'm following, it is Stephen Horsner. Its name is visualbasic.net. It is a black book. The Coriolis Group and Coriolis Group LLC 2001. So you may search or find this book. In addition, you may go to the MSDN part of Microsoft, msdn.microsoft.com, Visual Basic. You may learn, you may download material, topics, and apps, softwares, etc. from there. And it is another website, www.net247.com. You may visit these websites to learn from them. Okay, to learn from them. Okay, to learn. So I think that's all for today. We have thank you, let me say thank you, and that's all for today.
we have finished this 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 topic. So inshallah we will keep it continue. I mean we will keep continue our course visualbasic.net in the next lecture as well. And here we I taught you many things in these slides, and we covered these 33 slides in I think in 2 or 3 lectures, as I always repeat things again and again. So because of over repetition, we couldn't finish 33 slides quickly, and we finished them in 2 or 3 lectures. So I hope you would have understood, and that's all for today. Thank you very much, and please stay with me in the next lecture as well. And let me go to the comment section. Slide number 31 sir. Okay सर ये स्लाइड ये लास्ट स्लाइड रिपीट करें प्लीज़, हाउ टू ऐड कमेंट्स वाली. ओके आई विल रिपीट. ओके सर उर्दू में एक्सप्लेन करें, इंग्लिश में बहुत मुश्किल है. ओके 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 ठीक है. कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर उर्दू में एक्सप्लेन करें, इंग्लिश में बहुत मुश्किल है. चले मैं उर्दू में आता हूँ. सर स्लाइड नंबर 31 की तरफ जा रहा हूँ. जुनैद नकवी साहब, ये जुनैद नकवी यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन ये वो जुनैद अब्बासी साहब मुझे लग रहे हैं, वो जो कहते हैं कि मेरा एक भाई कर्नल है और दूसरा मेजर जनरल है और तीसरा लेफ्टिनेंट है और चौथा चीफ. ये वो जो डराता बहुत है यार. तो चले आ जाए. मैं नकवी साहब, मैं आपके लिए ये स्लाइड नंबर 31 रिपीट करता हूँ. ये जो जुनैद साहब ने क्वेश्चन पूछा, इसका ये मतलब है कि जुनैद साहब अपनी अटेंडेंस शो करेंगे, सर मैं प्रेजेंट हूँ. बाकी ये तो कभी क्वेश्चन पूछने के बारे में सीरियस नहीं होते. लेकिन चलो 31 में आते हैं. ये देखिए 31 में जो जुनैद साहब 31 में अगर आप देखें तो हम यूज़ कर रहे हैं इम्पोर्ट टू इम्पोर्ट अ नेम स्पेस. इसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपके पास एक नेम स्पेस है जो कंपनी की तरफ से आई है, एक लाइब्रेरी है पीछे पड़ी होती है, आप उसको कैसे यूज़ करेंगे. तो आप उसके लिए स्ट्रिक्ट कोशिश करें कि ऑफ हो, ऑन मत रखें, क्योंकि ऑन जो है इट इज़ डेंजरस बिकॉज ऑफ इसकी वजह से अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो यू मे लूज डेटा. ठीक है. दूसरी बात है एनीवे समटाइम्स इवन अगर आप इसको ऑन भी रखें तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये बेहतर है कि आप इसको ऑफ रखें. तो हम क्या कहते हैं, ये जो 2 लाइन्स है इसमें ये बड़े काम की, जिसका कलर जो है मैं इसको क्या कहूँ ब्लू है. तो ठीक है. तो हमने क्या किया कि भाई इंपोर्ट करो, कहाँ से, पीछे लाइब्रेरी में जाओ और एक नेम स्पेस इंपोर्ट करो, एक लाइब्रेरी, और इसका नाम है सिस्टम डॉट कंसोल. तो ये जब इंपोर्ट होगी उसके बाद ये स्टेटमेंट काम करेगी. अगर ये इंपोर्ट नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट कभी भी काम नहीं करेगी. तो यहाँ से मॉड्यूल 1 मैंने स्टार्ट कर दिया और मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह C++ में मेन फंक्शन हुआ करता था. यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट और एंड हियर इट एंड्स. ओके यहाँ पे ख़त्म. और यहाँ पे मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट जो मैंने पुट की, इसका ये मतलब है कि भाई मैं आपको बता सकूँ कि ये जो राइट लाइन स्टेटमेंट है ना, आउटपुट स्टेटमेंट, ये काम कर रही है. मैं क्यों आपको बता सकूं कि भाई ऊपर हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है. अगर ये लाइब्रेरी आप कह रहे हैं कि भाई ठीक इंपोर्ट हुई है और ठीक काम कर रही है, तो आप नीचे राइट लाइन स्टेटमेंट चेक कर, इसमें हेलो कुछ डालें, हेलो गाइस हाउ आर यू. अगर स्क्रीन पे ये हेलो आ गया तो ठीक है, आपने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की है वो ज़बरदस्त तरीके से इंपोर्ट की है, वो ठीक है, काम कर रही है. अगर स्क्रीन पे हेलो नहीं आया और राइट लाइन ने एरर दे दिया, तो मीन्स आपके लाइब्रेरी में कुछ मसला है और आपने ऊपर ये जो नेम स्पेस है ये ठीक इंपोर्ट नहीं किया सही तरीके से. ठीक है. तो आई होप नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड. और यहाँ पे मॉड्यूल 1 स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मेन फंक्शन ख़त्म. ऊपर मॉड्यूल 1 शुरू होने से पहले हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी और इसका नाम है सिस्टम डॉट कंसोल, जो कि मेन लाइब्रेरी है कंसोल एप्लीकेशंस के लिए. ठीक है. अभी आपको समझ आई होगी. और मेरी नेक्स्ट क्लास है सर ये हेलो की जगह वी कैन राइट एनीथिंग, वी कैन वांट. यस 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 हेलो की देखो, हेलो तो हम ये सिर्फ शो करना चाहते हैं कि भाई हमारी लाइब्रेरी काम कर रही है, तो इसलिए मैंने हेलो स्क्रीन पे आउटपुट कर दिया. आप हेलो की जगह पे हाय बोले, आप अस्सलाम वालेकुम बोले, आप उसके बारे में आप उसकी जगह पे लिखे सिंगा ये मरगरू ज़दा लाइब्रेरी चुकुम शिकार कई कहना जकदा मैसेज पाके मावा चोलो मुतासु दासे किस्म कमेंट्स पाके achawale shi ठीक है. It's like comments message ना, it is not a kind of comments are something else. Yes, you may call it message. It is a kind of message. It is a kind of output stream. What are the output stream? दे तम वो आयु stream ठीक है. Input output stream. Input output के दा जिस C++ तम बोझो मलता हो पीछे लेकिन चिता सुवा scan if print if दा C language की. C++ की हम बोलते हैं कि सी इन एंड सी आउट.
जावा में हम बोलते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट एलन। यहाँ पे हम इसको कंसोल एप्लीकेशन में हम लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सिस्टम डॉट राइट लाइन, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, और सिर्फ राइट लाइन भी लिखेंगे तो ये काम कर लेगा। डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज आप डालेंगे वही मैसेज स्क्रीन पे आएगा। अभी आपको समझ आई होगी। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। सो बहुत से स्टूडेंट नहीं है, इसहाक आज एब्सेंट है, मुजाहिद एब्सेंट है, ठीक है, और गनी जो है उस्मान गनी एब्सेंट है। ये एब्सेंट को बता दें कि सर ने आपके आपके नाम ले रहे थे स्पेसिफिकली और पूछ रहे थे कि भाई आप लोग क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो उस्मान गनी नहीं है, ये इसहाक नहीं है, ठीक है, औरंगजेब नहीं है, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट नहीं है, नसीर निश्ता, ठीक है, नसीर नहीं है, समीउल्लाह नहीं है, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट नहीं है। आप लोगों ने क्या गप बनाई है यार, ठीक है। उमर है, अनस है, ठीक है, और जबी, औरंगजेब, एक औरंगजेब है, दूसरा नहीं है, ठीक है। और बशीर ने आज हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है हमारी क्लास अटेंड करने के लिए। आज पहली दफ़ा आए हैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। एनीवे ये स्टूडेंट मेरे नज़र में हैं। आमिर स्वात से आए हैं, जस्ट प्रेजेंट सर बोल दिया और नंबर बता दिया और गायब हो गए। उसके बाद इसको कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे पता है। तो चले, एनीवे लेट्स सी, आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके सर, जबरद इन्फॉर्म करो। ओके, I am observing each and everything. All students are under my observations, and I'm observing them. Who is serious? Who is non? Who is not serious? And who is attending my classes regularly. Okay. So on the basis of this performance, I will mark midterm and final term score. Score for the midterm exam and final term exam. Okay, so that's all for today. Thank you very much. We'll see you. Allah